1 second. All of us have to exemplify our conduct. Yes. So that it could be emulated by others. Yes. It is good of you. I took back. It is good of you to take snipe shots, but in the process, maintain decorum I didn't mean and that. dignity. Go ahead. It is expunged. Yes. Go ahead. So, my request to Amit Shah ji, it is happened in Kashmir and in here and maybe in Punjab tomorrow, I don't know. So, whatever is happening in our immediate solution should be in Manipur and Haryana and other places. So, I request Amit Shah ji to interfere in Manipur more than in Delhi affairs, small affairs. Some officers changing this and all. But this gentleman, our chief minister, came as a, what you call, I am telling, as a hero. I was thinking that they are the B team of BJP before I was thinking. But now only I came to know they are not the B team of BJP. They are also want to rule Delhi as a chief minister. So I stop this one asking again to Amit Shah ji to repeal this bill. Thank you. Shri Ranjan Gagoi. Honorable members, it is the maiden speech of the honorable member. I thank the Chairman, sir, for the opportunity. It's a great day. A maiden speech on a subject that is very dear to my heart and a subject that can be as related to law as possible. So a maiden speech, I believe the chair is a little indulgent and gives a little more time, but I won't take much time. A maiden speech also has the protection of the House. It is freedom of speech in an absolute form. The member has a right to say on the first day whatever he wants. So, I would confine myself to the legality of the proposed legislation. And I will address the House and the Chair, of course, from three standpoints: sub judice, overreaching the Supreme Court's order, and the constitutional validity. So there is some faint voice about impropriety, sub judice. As a layman, it is not sub judice. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance. What the House is debating is on the validity of a law. Please. Would you please take your seat? No. Absolutely no. 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 Don't force me. The House was going well. This is the replacement of that ordinance. One second. No, there is a difference. All right. Do you want me to go further? Please take your seat. Mr. Chairman, I sir. will not allow. This is not good. Mr. No one Chairman, was sir. interrupted. You suddenly rise. The House is getting enlightened. Trust me. Mark every word. The House is getting enlightened, as was enlightened by others also. Please go ahead, sir. Mr. Chairman, sir. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance, and specifically two questions referred to the Constitution bench. That has nothing to do with what is being debated in the House, number one. Number two, this is for all the members of the House, and it has some importance so far as the relation between the judiciary and the executive is concerned. I would request all the members of the House to have a relook at Articles 105, 121, and 122. There is absolute freedom of speech in Parliament, and whatever a member says in Parliament
cannot be questioned in a court of law. I do not find a similar constitutional provision restricting the debates in courts. What the courts cannot do under 121 is question the conduct of a judge in relation to a pending matter. The restriction that the House imposes on its own speech is self-imposed by the rules. And what do the rules provide? Mr. Chairman, sir, the rule says a member shall not discuss a matter of fact which is a court pending before a court of law. It's not a matter of fact that is what is being debated. It's a question of law. It is not even an interpretation of law. It's on a debate on law. Now, Mr. Chairman, sir, so where as sub judice is concerned, the bill takes away 3A from the ordinance. To my mind, it's a perception, I may be wrong. To my mind, when 3A has been taken out of the ordinance and it is not there in the bill, the questions referred to the Constitution bench stands self-answered. Because if you read the order of the Supreme Court referring the matter to the Constitution bench, a copy of which I have got and I have read, my view is that the entire reference has been necessitated by the provision of 3A of the ordinance, which no longer exists. Therefore, it is the prerogative, the right of the members of the House to debate. The question of sub judice doesn't come. So far as overreaching or outreaching the order of the court, Supreme Court is concerned, very shortly put, the position in my perception is this. The state legislature makes laws for the states, the parliament makes laws for the union territories. For the National Capital Region of Delhi, which has a special status, the state legislature or the legislature of Delhi makes the laws on the state subjects, except 3. But as Mr. Jethmalani read out, by virtue of 239 3B, Parliament has a power to frame laws beyond these 3. And that is exactly what the bill is seeking to do. Therefore, there is no question of overreaching. And what has the Supreme Court repeatedly said? Paragraph 164, 2 conclusions. These are the 2 conclusions. May I read out these 2 conclusions? The legislative 164C, the Legislative Assembly of the NCTD has competence over entries in List 2 and List 3, except for the expressly excluded entries. In addition to entries in List 1, in addition to entries in the Union List, Parliament has legislative competence over all matters in List 2 and List 3 in relation to NCTD. This is the conclusion in paragraph 164C. Paragraph 164F, the executive power of the NCD with respect to entries in List 2 and List 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the Union by the Constitution or by a law enacted by Parliament. So this is the conclusion of the Supreme Court. And therefore,
Now, what has the Supreme Court repeatedly held in the 2018 judgment and the 2023 judgment? Precisely this. And I'm very grateful for the fairness shown by the first speaker, Dr. Singhvi. If I'm not mistaken, what Dr. Singhvi said, the power of Parliament is not in dispute. He said it very fairly. The power of the legislative competence of Parliament is not in dispute. Then why would this law be bad? This law would be bad if it violates the fundamental rights, number one. Number two, if it violates any other provision of the Constitution, and if it violates the basic structure of the Constitution. Right. Honorable members, Yes. I don't have to remind honorable members, it's a maiden speech. Yes, please. And the honorable member is making his point very rationally. Sir, It is one point of view. I will take. Well, the chair has taken a call I will take 2 and minutes. bear with it. Sir, Sorry. you have 15 minutes. You have 15 minutes. Should we? So far as One second. fundamental Honorable right is member, concerned. Honorable member, one second. far- One second. Yes. This House should not set an example that an honorable member with huge experience in his matter is making a point. And every time you rise and tell me, time is over. It is my authority on a maiden speech. Sorry. Honorable members, I have given adequate time to every member on the maiden speech. Yes. And I had every time pleaded with you to show respect. Merely because what the point is being made, it is required not to be registered, but to be digested. And you will have an opportunity to deal with it. We are getting input in this House from a very experienced legal mind. We got it from Dr. Singhvi. We got it from Mr. Chidambaram. We got it from Mr. Mahesh Jethmalani. We have to get also from Mr. Gagoi. Please, sir. In any case, Honorable Chairman, sir, I have come to the end of it. Violation of fundamental rights. The only fundamental right that can be violated is perhaps Article 14, and that too, the limited part of Article 14, that the law is arbitrary. Is this law arbitrary? This doesn't appear to be so. The law may not be to my liking. That does not make it arbitrary. Absolutely. Next, does it violate the basic feature of the Constitution? Sir, I have to say something about the basic feature. Please. There's a book by Mr. Andarajuna, Yes. the former Solicitor General, on the Keshavananda Bharti case. Yes. Having read the book, my view is that the doctrine of basic structure of the Constitution has a very debatable jurisprudential basis. I would not say anything more than this. I wouldn't say anything more. The doctrine of basic structure has a very debatable jurisprudential basis. In any case, Honorable Chairman, sir, what the bill provides is diluted form of what federalism, because it's a union territory, not a full-fledged state. Therefore, what you have is a diluted form, asymmetrical form of federalism.
And the third thing is, does it violate any other part of the Constitution? The Supreme Court mentioned about triple autonomy. What you have under the bill is a modified form of triple autonomy. The bureaucrat is responsible to a lieutenant governor, who is responsible to the Home Ministry, who is responsible to the House. You have a modified form. If you want a full-fledged federalism, which today is a basic feature, though I have my own perceptions there, you can go for an amendment, for a constitutional amendment, and make Delhi a full-fledged state. Now, the most important thing, Chairman Sir, is Article 239AA, starting from 1 to 7, is not under challenge before the Supreme Court. Challenge it. That is not under challenge. Therefore, in my respectful submission, my contention, the bill is perfectly legitimately valid. But I fully support Mr. Vikas Bhattacharya, who has been a very close associate of mine. What is permissible need not necessarily be right. In the House today, parliamentary democracy compels members to vote according to party dictates. Fine, I cannot quarrel with that. It's a small section of people to whom you appeal to their conscience. To me, the bill is correct, right. My conscience tells me to do something, I'll do it. But if somebody disagrees, his conscience must be left free. Thank you. I am honored. I'm privileged. Well, we have one thing in common. Dr. Vikas Bhattacharya is also my good friend and known to me for long. And I remember when he was mayor of Kolkata Municipal Corporation. Dr. Fozia Khan. Thank you very much, sir. Sir, I wish to express my profound concerns and my vehement opposition to the bill, sir. This bill, as said by many of my colleagues, raises many constitutional apprehensions and threatens the very foundation of democratic principles and federal structure, sir. Sir, as already spoken by many, disrupting the triple chain of accountability jeopardizes the very essence of our democratic system and erodes the trust that the people repose in their elected representatives, sir. Sir, I think the most important in a democracy is the people. We must never, never forget that. Everything that we do here, everything that we do is only for the people. And if, sir, we talk about people, my question is, can the electorate be betrayed? If you are betraying the electorate, isn't it a betrayal of democracy? When the people of Delhi have laid their trust on a particular government, couldn't we even have waited till the tenure to get over so that we wait legitimately for that government to finish the tenure till we make it toothless, sir? Why do we have to make a government toothless? It is here, sir, that we are laying a crack on democracy. On the timelines of history, sir, एक दिन आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हम और आप यहाँ के कोई नहीं रहेंगे, लेकिन सर जो डिसीजंस हम लेंगे वो डिसीजंस आगे के जनरेशंस के लिए यहाँ पर रहेंगे। सर, सुधांशु त्रिवेदी जी ने और बहुत सारे ट्रेजरी बेंचेस के सदस्यों ने वैयक्तिक टिप्पणी की है केजरीवाल जी पर।
मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि अगर केजरीवाल जी से कोई गलती हो रही है ऐसा मान के भी चलते हैं तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहिए उसके लिए? मुझे ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है सर। Parliament does have the power to make law. I agree with it, sir. We are not disputing that. But the essence of democracy cannot be killed at any cost, sir. And here we are killing the essence of democracy. Mr. Tiruchi Shiva here spoke about constitutional morality. And I more than agree with him, sir, that constitutional morality also must be considered when we are talking about this. And that if we agree that this is a union territory, why do we have an assembly at all? Let us dissolve this assembly and finish it and make a proper union territory. If it is a union territory, Delhi has a special status, so we must not forget that. And if you have a special status, although we have the right to make a law here, sir, we have to see that the essence of democracy is protected. Sir, here in this parliament, we speak about the nation. When a government, sir, do I stop? 4 minutes. Go ahead, 1 minute more. So if a government comes to, if it is elected, the government gains many things, sir. It gains decision making, it gains power. पावर के साथ पुलिस है सर, पावर के साथ सीबीआई है, पावर के साथ ईडी है, पावर के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पावर के साथ मीडिया है. लेकिन सर, it loses one thing. We must not forget that the government loses one thing when it comes to power, and that is, sir, whataboutery. Correct, sir. Whataboutery is one thing that is the right and the duty of the opposition. But here what we see is, we are always talking about what about this. The moment the opposition says what about this, an answer comes from there, what about that? What about here? Somebody says what about there? Sir, this is not the right of the government here. It is the responsibility of the opposition. Thank you, sir. Sri Sant. 4 minutes. सिर्फ 4 मिनट्स Only 4. ऐसा कैसा चले? मेरा भी मिडन स्पीच है। देखिए संजय जी, संजय जी, ये चीजें स्ट्रेंथ से डिटरमिन होती हैं, लंबे समय से हो रही हैं। सर 4 minutes. सर मैं इस बिल के लीगल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहता हूं। चिदम्बरम साहब, डॉक्टर सिंघवी, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सभी ने इस बारे में बात किया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक बहुत ही खतरनाक बिल लेकर आए और इस बिल को विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। जो इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे, इंडिया के साथ बेईमानी करेंगे। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, लोकतंत्र की हत्या है। देखो 4 मिनट है, मुझे 2 मिनट काफी है, तो ज्यादा आवाज मत वहां से करिए। एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में है, विधानसभा है, असेंबली है। सरकार, लोगों ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिए है, एलजी को वोट नहीं दिया है। एलजी नहीं जाता वोट मांगने को, वोट मांगता है केजरीवाल या कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार, कोई नेता। हाँ, आप 5 बार चुनाव हार गए, 6 बार चुनाव हार गए। आज भी दिल्ली के विधानसभा में आपके 5 विधायक नहीं है, और इसलिए आप दिल्ली विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, आप कब्जा लेने चाहते हैं।
सरकारें कौन चलाएगा? हम लोकतंत्र की बात अगर करेंगे, मैं वहां की बहुत से लोगों के मेरे मित्र हैं, भाषण सुन रहा था, मुझे लगा उनको पुराने दिन याद आएंगे जब लोकतंत्र के बारे में बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे, लेकिन आपके आंखों में मुझे कोई लज्जा नहीं दिखी। मुझे दो पंक्तियां याद आई गोपाल दास नीरज की, मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका। आपने तो सब कुछ बिक दिया है, पब्लिक सेक्टर से लेकर लोकतंत्र तक, विधायक, सांसद, सरकारें। मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका, आपके आंखों की शर्म तक आपने बेची है। सर, आप दिल्ली का चुनाव हार गए, आप 2024 का चुनाव भी हारने जा रहे हैं। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना दिया है, लेकिन उनका जो सम्मान होता है, उनको जो लोग बाइडेन से लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट तक जो गले लगाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं गले लगाते, एक महान लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं। और आप उस महान परंपरा को, उस महान संस्कृति को आप खत्म करने जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री पुणे में गए थे, लोकमान्य तिलक का नाम से उनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला। I requested the honorable members, and this is not a good tendency. सर, मैंने क्या बोला? No, मैंने गलत क्या बोला? One second. It is प्रधानमंत्री जी को Mr. Sanjay Raut, it is not that. के नाम No. से पुरस्कार मिला। Okay, your time is over. लोकमान्य Shri- तिलक का No, Mr. Sanjay. Your time is over, Sanjay Raut. And when I say your time is over, I mean time for this address only. मेरा और 2 मिनट दिग्विजय सिंह जी, आप इतने सीनियर सर, आदमी मेरा और 2 मिनट हैं। In this house, we must have respect for constitutional functionaries. Let us not create a system which is not good. नहीं। No. Priyanka. Message from Lok Sabha Secretary General. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2023 passed 1. The Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 and 2. The Pharmacy Amendment Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. Shri Ghanshyam Tiwari, 15 minutes. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इसकी बहस की शुरुआत करते समय माननीय श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, उन्होंने चेतावनी दी बीजेडी को, वाईएसआर कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि भाई आप इनके साथ जा रहे हैं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आग दूर तक आएगी। लेकिन सभापति महोदय, वो मेरे मित्र हैं, जोधपुर के हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो केजरीवाल जी के पास वो गए हैं, इसलिए वो अपने आप को संभालें, क्योंकि केजरीवाल साहब के साथ जितने भी लोग थे जो शुरू में उनके साथ आए, चाहे प्रशांत भूषण जी आए, चाहे स्वर्गीय शांति भूषण जी आए, चाहे योगेंद्र यादव जी आए, चाहे कवि जी आए, या जितने भी लोग आए, वो सबसे पहले अन्ना हजारे आए। अन्ना हजारे की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर किरण बेदी की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर प्रशांत भूषण की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर शांति भूषण जी की बात उन्होंने नहीं मानी, योगेंद्र यादव जी की बात नहीं मानी। सबको उन्होंने अलग अलग अपने स्थान पर भेज दिया। अब उसके बाद में 2 आदमी बच गए उनके पास में, वो श्री मनोज सिसोदिया जी बचे और सत्येंद्र जैन जी बचे। जब वो नहीं गए तो उन दोनों को जेल में भेज दिया। इस प्रकार से उनके पास फिर कोई नहीं रहा।
क्या कोई नहीं रहा। इसलिए अब अगर कोई खतरा है तो खतरा कांग्रेस पार्टी को है और कांग्रेस पार्टी उनसे सावधान रहे। और जहां तक ये कांग्रेस पार्टी का और आप पार्टी का साथ आने का सवाल है, सभापति महोदय, ये तो मुद्दा मेरीज है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमारा इस बिल में आप समर्थन करोगे तो हम आपके साथ आएंगे, और ये बिल लोकसभा में पास हो गया, अब ये राज्यसभा में पास होने वाला है। इसके बाद में ये मुद्दा मेरीज टूट जाएगी और ये केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए सनीसर बनकर उनके सामने ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए वाईएसआर कांग्रेस को या बीजू जनता दल को करने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्वयं सोच ले कि उसका क्या हाल होने वाला है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं सभापति महोदय, उन्होंने बार बार एक बात कही कि साहब नेहरू जी के समय बात हुई, ये बात हुई। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हमारे हैं, उनकी एक आदत है, वो लंबे समय से जो काम चल के आता है और जो पूरा नहीं होता, विवाद में रहता है, उसको पूरा कर देते हैं। जैसे आर्टिकल 370 नेहरू जी के समय से चलाया था, पूरा नहीं हुआ, इन्हीं सदनों में पास करके उन्होंने पारित कर दिया, वो पारित कराया, कराया सक्सेसफुली। और दूसरा, फिर इसी प्रकार से रामलला के, राम जी के मंदिर के बारे में बोल रहे थे, वो भी इनके गृह मंत्री के काल में पूरा हुआ। और ये विवाद जो पंडित जवाहर, ये विवाद जो ये विवाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चला रहा था दिल्ली के बारे में, फेजल कमेटी बन रही है और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बन रही है, बाल कृष्ण की कमेटी बन रही है, और कई प्रकार से नगर परिषद बन रही है, नगर निगम बन रही है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बन रही है। ये सारा काम करने के बाद में 15 वर्ष तक आदरणीय शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद, मदन लाल जी खुराना के रहने के बाद कोई विवाद नहीं हुआ। ये विवाद जब केजरीवाल जी आए, उन्होंने खड़ा किया। अब उस विवाद का भी समाधान आज माननीय अमित शाह जी के हाथ से हो जाएगा और इस बार दिल्ली के बारे में कोई समाधान नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात जो यहाँ पर बार बार उठाई गई, मैं उससे सैद्धांतिक रूप से मतभेद रखता हूँ। माननीय गोगोई साहब यहाँ पर बैठे हैं, वो भी सुनेंगे, बड़े बड़े वकीलों की बात भी हमने सुनी है। कौन सा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट करता है? फैसला नेता करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस करते हैं और संसद सदस्य करते हैं। मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि पहला संविधान संशोधन कब आया? पहला संविधान संशोधन इस सदन में आया जब 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन को स्ट्रेट डाउन कर दिया। उसके बाद पहला संविधान संशोधन आया और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, उसका निर्णय जनप्रतिनिधियों ने किया और एससी और एसटी को हमने रिजर्वेशन दिया। दूसरा बहुत बड़ा प्रसंग आया माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस वाले सब भूल गए, संविधान लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप भूल गए जब साबानो का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस प्लीज। जब साबानो का केस आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि एक महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, उस समय कांग्रेस पार्टी को साफ सूख गया था। वो इसी सदन में संशोधन लेकर आई और संविधान के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा। जो साबानो के केस में पेश पलट सकते हैं, वो आज संसदीय लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इसके बाद माननीय सभापति महोदय, और कितने प्रसंग आए। ओबीसी के आरक्षण का प्रसंग आया, ओबीसी के शिक्षा में रिजर्वेशन का प्रसंग आया, और 9 सदस्यीय बेंच ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को निरस्त कर दिया था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी सदन में संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिलाया और 53 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निरस्त किया। इसलिए यह कहना कि यह संविधान की अवहेलना है, यह संविधान की अवहेलना भी नहीं है और यह लोकतंत्र की अवहेलना भी नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बार बार एक बात, इतनी जल्दी क्या हो गई थी, इतनी जल्दी क्या हो गई थी?
भाई इतनी जल्दी सरकार को पूछ रहे हो तो यहाँ की सरकार को पूछो, दिल्ली को, उनको इतनी जल्दी क्या हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही रात को 12 बजे जाकर ताले तोड़ने लगे? वो जल्दी कहां से आ गई थी? सब ये क्यों गई थी? तो ये इसलिए हुई। दूसरी बात, आज तक कोई भी दिल्ली की सरकार कोर्ट में नहीं गई। आदरणीय शीला दीक्षित जी भी नहीं गए, मदन लाल खुराना भी नहीं गए। ये किस लिए गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमको ये अधिकार मिलने चाहिए? ये अधिकार उसके पहले इनके पास नहीं थे तो ये गए, और गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला किया। जब ये कोर्ट के इतने ही भक्त हैं तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मान लेते, तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं माना। इसके बाद में ये गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका केवल एक आख्यान पढ़ते हैं, बाकी 2 आख्यान जो भी माननीय महेश जी ने भी बताए और माननीय गोगोई जी ने भी बताए, उनको पढ़ नहीं रहे। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। और ये जो आया है आज, ये जो संविधान संशोधन का बिल आया है, ये ऑर्डिनेंस को जो वो करने का बिल आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार है। और लेकिन किसी भी देश में सब जनप्रतिनिधि फैसला करते हैं। 1926 के पहले ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, और वहां की प्रिवी काउंसिल ने तय कर दिया था कि अधिकार उनको नहीं मिल सकता क्योंकि कानून के अंतर्गत नहीं है। प्रिवी काउंसिल ने फैसला किया, और फैसला करने के बाद में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। भारत में तो पहले से है। ये जितने निग्रो हैं, इनको वोट का अधिकार अमेरिका में नहीं था, और अमेरिका की ब्लैक इन ब्लैक को अधिकार नहीं था, और इनको जब वहां की फेडरल कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आप वोट नहीं दे सकते, कानून में नहीं है, तो अमेरिकन कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर उनको वोट का अधिकार दिया। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उसी प्रकार अन्य देशों में हुआ। इसलिए कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि ये ठीक है कि ये गलत है, वो नहीं है। भारत में भी आज तक के 50 उदाहरण हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलकर हमने जनहित में निर्णय किए गए हैं, और ये दिल्ली के जनता के हित में सबसे बड़ा निर्णय माननीय अमित शाह जी लेकर आए हैं, वो हम करने जा रहे हैं। और इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये बार बार कहना कि दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली का एक विशेष स्टेटस है, उस स्टेटस को सबने माना है। अब दिल्ली भारत की राजधानी है। एक भी दुनिया के किसी देश का उदाहरण आप नहीं दे सकते कि उस देश के अंदर वहां की राजधानी है, उसका अलग प्रांत हो। यहां पर विदेशी आते हैं, यहां पर इतने बड़े सम्मेलन होते हैं, और यहां पर भारत सरकार कितने काम कर रही था। अभी भारत मंडपम इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, वो केंद्र सरकार ने किया है। अब युगे युगेन भारत है, इतना बड़ा जो म्यूजियम बनने वाला है, वो म्यूजियम भारत सरकार ही तो बना रही। तो ये इस प्रकार के काम दिल्ली में होना, दिल्ली में वार मेमोरियल बनना, दिल्ली में सारा काम होना, दिल्ली में सभी राजदूतों की सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना, ये सब काम हो रहे हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बिल की 3 बातें जो कही गई, न तो ये संविधान के विपरीत है, न ये लोकतंत्र के विपरीत है, न ये दिल्ली की जनता के विपरीत है। हाँ, ये विपरीत है कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस पार्टी के खास आदमी नेता है कांग्रेस के, उन्होंने दिया स्टेटमेंट कि ये बिल ठीक है। पंजाब के कांग्रेस वालों ने कहा बिल ठीक है, लेकिन ये जो टेम्परेरी मुद्दा मेरी हुई थी, केजरीवाल जी ने कहा कि हमारा अगर समर्थन करोगे तो हम इंडिया में आएंगे, और आज ये जो ही पास होगा ये मुद्दा मेरी टूट जाएगी, और वो इंडिया INDIA जो है उससे ए अलग खत्म हो जाएगा, और ये 4 ही बचेंगे। क्योंकि पहला काम ये करेंगे तो उनके खिलाफ ही करेंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली में पहले इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, और कांग्रेस ने समर्थन देकर केजरीवाल जी को बढ़ा दिया था, बन गए।
पर दूसरी बार जब आए तो कांग्रेस को पूरी को हजम कर गए, तो कांग्रेस साफ हो गई। इसी प्रकार पंजाब में कांग्रेस को साफ किया। अब आगे भी उनका उद्देश्य तो कांग्रेस को साफ करना है, तो हमारी कहां लड़ाई है? तो ये जो काम है, और इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जितना सारा काम ये माननीय अमित शाह जी ने किया है और जो प्रस्ताव पेश किया है, वो सब बातों को सोचकर किया है। और एक विवाद जो इतने लंबे समय से चल रहा था, पेयजल कमेटी बने, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की बने, सरकारिया कमीशन बने, फिर संशोधन आया और 91 से लेकर 15 तक किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ, तो बोलने वालों को तो ये सोचना चाहिए था कि विवाद पैदा क्यों हुआ है। अब दूसरी बात, अगर ये संविधान के विपरीत होता तो इनको सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलता, वो स्टे भी नहीं मिला। ये वहां स्टे लेने गए, स्टे नहीं मिला। अब संविधान पीठ में गए तो संविधान पीठ इसको देखेगी। पहले ही फैसला कर दिया उन्होंने कि 339A के अंतर्गत सारे कानून बनाने का अधिकार भारत की संविधान सभा को है, वो है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये धमकी देना दूसरे को, और एक बात मैं साफ रूप से कहना चाहूंगा, माननीय चिदम्बरम जी ने एक बात कही कि जम्मू और कश्मीर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। मैं कई बार कहता हूं कि लोग अपने कृत्यों को भूल जाते हैं। आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, कांग्रेस ने किया। फिर तेलंगाना और आंध्र अलग हुआ, कांग्रेस ने किया। कितने प्रांत कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने तोड़े, तो क्या कांग्रेस ने राज्यों के अधिकार खत्म कर दिए थे? प्लीज, वो कांग्रेस ने तोड़े, तो ये अधिकार केंद्र के पास। तो इस प्रकार पंजाब का विभाजन हुआ कांग्रेस के समय, हरियाणा बना, पंजाब बना, कांगड़ा मिलकर हिमाचल प्रदेश बना, ये कांग्रेस टाइम में। और संविधान की बात करते हैं, और ये कहते हैं संशोधन क्यों लेकर आए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद और जस्टिस A.K. कृष्णा अय्यर के सुप्रीम कोर्ट में स्टे ने देने के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके अध्यादेश जारी करके अपनी मेंबरशिप कायम रखी। उतना बड़ा गलत काम हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। वो पार्टी पार्लियामेंट की बात करे, वो पार्टी कानून की बात करे, वो पार्टी संविधान की बात करे, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कानून, ये अध्यादेश संविधान के अनुसार है, दिल्ली के जनता के हित में है, और ये उसी प्रकार से समस्या का समाधान कर देगा जिस प्रकार से आर्टिकल 370 को समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ। अब किसी को भी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली की समस्या का भी परमानेंट समाधान हो जाएगा। ये इस बिल में है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय घनश्याम जी। ऑनरेबल श्री वाइको जी, यू हैव 4 minutes, सर। Mr. Deputy Chairman, sir, I crave your indulgence for some generosity. We small parties always face the same difficulty. So I kindly be liberal with 1 or 2 minutes. Honorable Chairman has been very generous. This debate is for 6 hours. You are getting 4 minutes. That's enough. That's why he is asking. Honorable, please. Honorable. Honorable Vaiko ji. With all the force under my command, I oppose this abominable, undemocratic bill which strikes at the very root of democracy, the very root of federal spirit, at the very root of secularism, at the very root of social justice. Sir, the government of National Capital Territory of Delhi Bill 2023 has brought forth seismic shifts in the governance landscape of Delhi. While cloaked in the garb of administrative efficacy, the bill in many ways appears to erode the democratic fabric that is intrinsic to Indian polity. The bill notably clips the wings of the Delhi Legislative Assembly by stripping it of the power to legislate on services. This is a deviation from the norm, where a state legislature would typically
have jurisdiction over subjects in the state list with exceptions. The establishment of the National Capital Civil Services Authority on the surface may seem like an earnest attempt to streamline administrative processes. However, delving into composition and powers exposes an unsettling reality. The Chief Minister, an elected representative, is rendered virtually, I should not use the word impotent, so he is rendered puppet within the authority. Now I recall what I read in history when I studied the college about the triumvirate in Rome, which was called a democracy. In Rome, when Julius Caesar but kept his sword. After his assassination, another triumvirate was formed and Antony took the reins of the power. Here, directly opposite what is going to happen in India. Among the triumvirate, these two principal secretary and cabinet secretary, they are the majority, and the chief minister only a puppet. So this is the verdict given by the people of Delhi has been thrown into the dustbin of history. Many governors are appointed by the government, the central government. The governors in the opposite ruled states, how they behave, how... Please, I am coming to the end, sir. Sir, these governors, what they do in my state, Tamil Nadu, the governor has not given assent to the... Please speak on Delhi. Has not given assent to the bills sent by the State Assembly. For all I am telling, please. State Assembly. So the Home Minister is sitting here. So he is the custodian of these governors. So these governors, what they do, You are very senior member. We are discussing this Delhi bill. Please. They do follow the philosophy of Hindutva and Sanatana Dharma. This is happening in my state, sir. Please. In my state. So the governors are behaving the agents of the central government. No, it will not go on record. Yes. Please follow rule number 0 and 240. No. Please speak on the bill. Speak on the bill. Of the central government. Speak on the bill. Your time is over. Your time is over, sir. You please finish. Conclude. Time is over. Finish. This bill should already. be thrown out of history. Thrown Please. out of the... Thank out you. into the dustbin. Thank you, This Honorable bill. Vaikoji. Thank you. Thank you. Mani Hardeep Singh Puri ji. Mani Hardeep Singh Puri. Honorable Deputy Chairman, sir, one of the advantages of speaking so late into the discussion is that some of the most amazing statements bordering on the outlandish have already been responded to by others, and some of the facts will, I'm sure, be covered in great detail when the Honorable Home Minister replies to this discussion. But I picked up some gems, and I thought I will share them with you. It was when the Honorable Chairman was presiding that words that were used included retrogressive, unconstitutional, control freak, principles of federalism violated, arrogant government, accountability, constitutional stupidity, cheap tactics, chicanery. Now, I would like to subject some of these terms to any dictionary of legal usage or normal linguistic usage. And I think much of this actually is applicable to what is being said by those who are opposing the bill, rather than the constitutionality of what we have brought forward. But I think the gem which I really enjoyed, and I think, sir, I say this out of deference to you because you yourself are such a high legal luminary, that when lawyers start quoting from historical figures, they should be careful. When they came for the socialists
I did not oppose because I'm not a socialist. Then they came for the trade unionists. I did not oppose because I'm not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I'm not a Jew, so I didn't oppose. Now they come for me. Sir, I want to humbly submit, they came for you. They first attacked you. And I'm talking about a period before the BJP government assumed office in May 2014. Let me remind you, because you seem to have selective amnesia. On the night of 15th and 16th of January, one of the so-called elected, accountable ministers of the Aam Aadmi government, a gentleman by the name of Mr. Som Bharti, he attacked a colony of foreigners, and he used a mob as an instrument of politics. Some foreign nationals were subjected to cavity searches. So that's a very serious term. Cavity searches, basic human rights violation. They were subjected to, urine samples were tested, and they said, I know the honorable Congress member is encouraging show, but let me complete. You don't know where you will have to look then. Let me remind you. Sit down, you'll benefit from this. And Honorable Chairman, sir. One second, sir. Oh, no, first ask your colleagues to take the seat. 1 second. 1 second. First ask your colleagues to take seat. Yes. Now what is your point? The point is, because he is naming the person who is not a member of this house. How he can name that person? Yes. Let me tell the honorable member, Mr. Gupta, that this issue was addressed by me on a point of order raised by the leader of opposition. And I had categorically held that this house has the power to discuss conduct of anyone. This house has the power to discuss anything under the planet. And as a matter of fact, this issue was signaled by former Chief Justice Mr. Gogoi also. If it is with respect to member of a Lok Sabha, then there is a set procedure that before making accusations, notice has to be given. So don't get upset. Don't get upset. Mr. Chairman, sir. 1 second. Let me tell you, Mr. Gupta, if you get upset, you will be helping Mr. Puri. You will be helping Mr. Puri if you get upset. Please. Sir, this unfortunate incident, which we would all want to forget, but which my friends, those who are opposing this bill, perhaps want to forget even more, took place on the fateful night of 15th and 16th January 2014. Sir, I wrote about it even then. I have a publication which has these and other such incidents documented. And these were, I can give them the citation, these were much before the BJP government under the leadership of the Honorable Prime Minister assumed responsibility. Sir, this did not end here, because the then so-called accountable Chief Minister, who did not succeed in persuading or using the margin of persuasion with the Delhi police force, then decided 3 days later to hold the entire city to ransom by going on a strike at Rail Bhavan for 36 hours. It was, sir, on the 20th of January 2014. And all he wanted was, those 3 police persons who did not support that vigilante type of action against those foreign ladies, they should be suspended. And sir, because we had a government in power in Delhi at that point of time, they followed the policy of appeasement. They indulged this kind of behavior, and 2 of the policemen were transferred because they were afraid that the 26th January celebrations would be thwarted. Sir, these are the facts, and let me not stop here. This was an action in January 2014. Now, this bill speaks to the heart of governance. Heart of governance. What does governance say? Sir, what does the heart of governance say?
and I'm very happy that my परमिशन की जरूरत नहीं भैया. my chance to speak came after my learned friend Shri Mahesh Jetmalani and others. But since I'm not a lawyer and I was preparing for this intervention, for which I'm deeply grateful to my party, there are 2 or 3 things which stand out. This particular insertion in 1991 and 239, what does it seek to do? It acknowledges the sui generis character of Delhi. The honorable member mentioned there was a reality. It is a union territory, yet it has a legislature, elected government. So he used the term escalated union territory. But that sui generis character needs to be acknowledged, it needs to be fleshed out, and that is precisely what the bill that the government has brought is seeking to do. Now, the civil service authority which is being established, I found it appalling that someone can get up here and say one member is the supreme. Yes, he's an elected chief minister. He deserves full respect. He deserves to have his position as primus inter pares in this 3-member committee acknowledged and respected. But to say that the other 2 are against the whole system, or they have been appointed and their integrity is in doubt, is an outlandish statement, if I may submit. Let me now read out to you how they treat their chief secretaries. Sir, I have in front of me the copy of an FIR filed a few months later. It was filed on 20th February 2018. The then chief secretary says that he received an information yesterday, that is 19th February. I was informed on telephone at 8:45 p.m. in the evening that the advisor to the Chief Minister, Shri V.K. Jain, that I had to reach the CM's residence at 12 o'clock at night. Sir, I'm not going to read out the whole FIR, but I'll read out some salient portion. He had already met the Honorable Chief Minister at that point of time, earlier in the day. He was to meet the Chief Minister again the next day because there was a cabinet meeting. And the contents of this FIR, sir, are amazing. He says he was told that if some advertisements that were the Honorable Chief Minister desired and some of their MLAs desired, if those advertisements are not released, he better come there at 12 o'clock. The Chief Secretary reached the Honorable Chief Minister's residence. He thought only the Deputy CM would be there, Shri Manish Sisodia. But to his surprise, 11 other MLAs were there. And they sat down and started questioning the Chief Secretary in an aggressive manner why those advertisements were not released, to which the Chief Secretary replies as part of the FIR, part of the subsequent legal records, that those advertisements could not be released in the light of the Supreme Court directives. Then what happened is even more amazing. The Chief Minister and the Deputy Chief Minister are present, and the Chief Secretary is physically assaulted. Now, I am not surprised. I am not surprised. Honorable member. इसका जवाब आप जनता के सामने देना, आप भूलना चाहते हैं इसको, हम आपको याद करवाएंगे. Honorable Minister, a copy of this FIR be laid on the table of the House. Here and now. Okay. Now I want to come to the subsequent stages of what happens. Sir, initially when the case came up in the preliminary legal stages, the government of the National Capital Territory of Delhi took the view that no such incident took place. Total denial. When it went up to the next stage, they said, हाँ incident तो हुआ था, पर इसमें Chief Minister और Deputy Chief Minister ने हाथापाई नहीं की, उनके MLAs ने किए हैं. साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके घर में आप MLAs को बुलाते हैं, उनको कहते हैं Chief Secretary की पिटाई कर दो, तो ये कोई मैकेनिज्म नहीं चलेगा.
ये इनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा और ये सब लीगल. Now let me come to a few substantive things, sir. I have had the privilege, sir, I have had the privilege of being Minister for Housing and Urban Affairs. Now, Nothing will go on record. Nothing. sir, I have had the privilege of being the Minister for Housing and Urban Honorable Affairs. members, I have heard from this side also, from every side of the house. One second, Mr. Gupta, you'll have to lend some ear to me.